टेली जगत में काफी बार सुना गया है किसी न किसी कलाकार के अपने को स्टार या फिर किसी करीबी दोस्त के साथ लिंकअप के बारे में। ये बहुत ही आम सी बात है और अब हमारे सेलिब्रिटीज इस नोशन के साथ बहुत ही यूज्ड टू हो चुके हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा नाम जिसने वाकई में शॉक कर दिया फैंस एंड ऑडियंस को अपनी खबर से, अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो वो होगा बिग बॉस की कलाकार देवलीना का। जी हाँ दोस्तों, साथ निभाना साथिया एक्ट्रेस के बारे में खबर आई कि शी इज डेटिंग समवन, लेकिन बहुत सीक्रेटिवली, और नहीं चाहती है किसी और को ये बात बताना या फिर अपने लव्ड वन के बारे में किसी से कुछ कहना। लेकिन अब ऐसा लगता है कि देवलीना इस बारे में बात करती हुई नजर आई हैं और क्लियर करती हुई नजर आई हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्या था वो रीजन जिसके कारण उन्होंने अपने पार्टनर का नाम अंडर रैप्स रखने में विश्वास किया। देवलीना भट्टाचार्य यानी कि हमारी गोपी बहू वाज लास्ट सीन इन रियलिटी शो Bigg Boss 14 as a proxy for Ejaz Khan. Over the past couple of years, the actress has been trying to break her bahu image by taking up projects in different genres in online spaces. एक लीडिंग पोल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे वो अलग जॉनर्स एक्सप्लोर करना चाहती हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं, how she has been spending her time and postponing her wedding plans. बिग बॉस के घर में देवलीना ने रिवील किया कि वो किसी को डेट कर रही थी, और जब उनसे अब पूछा गया कि क्या वो शादी के बारे में मन बना रही हैं, तो देवलीना कहती हैं, Yes, we are planning to get married this year, but I've decided to postpone it to the next year. I want this pandemic to end so that I can plan things further easily and happily. Currently, I'm in a happy space and my relationship is going really good. But you never know when things change. I want to take time to understand life and various situations. Even though my partner is very understanding and supportive, one can never know what can happen in the future. I am not someone who hides things. Once I decide to get married, I will let everyone know. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्यों अपने पार्टनर का नाम अंडर रैप्स रखने की कोशिश करी या क्यों किया, तो देवलीना कहती हैं कि वो किसी के सामने अपने होने वाले या फिर ये कहीं अपने बॉयफ्रेंड का नाम रिवील नहीं करना चाहती थी। वो कहती हैं, I am not ready to reveal my partner's name just yet. He is also not comfortable about making his name public since he does not belong to the industry. People will start sending him friend requests and following him on social media, which we really don't want at this stage. I prefer to keep my personal life under wraps and that's about it. उनसे जब पूछा गया that how has the lockdown been treating her, she says that she's been spending a lot of time with her pets. And what better than actually having a fluff ball next to you? Well, वो कहती हैं, I am in Mumbai currently and I've been avoiding going to my hometown Assam because I have my pets here with me and I need to take care of them. I can't leave them alone. I have been spending a lot of time at home doing some work too. My days are busy with workouts, taking care of my pets, household work and cooking. I also have been focusing on myself. Asking about when does she plan to resume work, Devalina कहती हैं that she's been planning to work real soon. I have a number of projects lined up in the web space. All of them have been postponed due to the pandemic. But I'm really hoping that post 15th of June, things open up so that a project can resume and I hope I really start work soon. जब उनसे पूछा गया कि उनका ड्रीम रोल क्या है, तो वो कहती हैं, If there is a role like Maya for Behad or a mature love story like बड़े अच्छे लगते हो, I would really love to do that one. वो कहती हैं, I have no problem with television because the platform has given me everything. I am known due to TV, but today there is a very less scope for an actor on the small screen. TV is very limited. The characters are similar, which don't give me the scope of doing something different. The content on OTT is giving me an opportunity to try different characters. I want to explore my acting abilities because I have been an acting akira ever since I have known. Lastly, जब उनसे पूछा गया कि what are the plans for Satya prequel, what she approached for that one, Devalina कहती हैं, I have been a part of Saath Nibhana Satya and season 2 of the show so far. No one has approached me for a prequel and honestly, I have no idea about anything of that sort. Well, कहीं ना कहीं देवलीना ने फैंस एंड ऑडियंस को इस बात की पुष्टि कर दी है कि बहुत जल्द वो शादी का प्लान बना रही हैं। If not this year, then अगले साल जरूर लगता है कि हमें सुनने को मिलने वाली है देवलीना की शादी की खुशखबर, शादी की खुशखबरी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा what do you have to say about Devalina's confessions. Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.